guys, I'm Tanya and welcome back to my channel. So today I'm going to share with you my Zara hauls. So recently Zara had this beautiful sale in which they had stuff up to 90% off as well, and ये सेल शायद अब भी गोइंग ऑन है. सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस ज़ारा सेल एंड चूज द पीसेस जो कि आपके साइजेस में अवेलेबल हो, बिकॉज एट दिस टाइम सेल तो होगी बट साइजेस बहुत लिमिटेड होते हैं. सो यू रियली हैव टू चेक अगेन एंड अगेन टू फाइंड योर परफेक्ट साइज. सो दिस ह्यूज ज़ारा सेल कम्स ट्वाइस इन अ ईयर, वंस इन मिड जून और जुलाई और एक मिड जनवरी में ये सेल लगती है. सो इन दिस सेल यू गेट अमेजिंग डील्स एंड ऑफर. ये बहुत ही अच्छी ज़ारा सेल लगती है. सो इफ यू आर विश लिस्टिंग फ्यू प्रोडक्ट्स देन ज़ारा सेल इज अ वेरी गुड टाइम टू बाय ज़ारा प्रोडक्ट्स एट अ वेरी गुड प्राइस. सो स्टार्टिंग में वैरायटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है एंड साइजेस भी काफ़ी अवेलेबल होते हैं, बट जैसे जैसे सेल खत्म होने लगती है वैसे वैसे सेल और भी ज़्यादा अच्छी होने लगती है और प्राइसेस काफ़ी कम होने लगते हैं. बट द प्रॉब्लम इज कि आपको उसमें लिमिटेड साइजेस अवेलेबल होते हैं. So if you're lucky then you will definitely find your perfect size, and yeah, the sale gets even better and better जब ये खत्म होने लगती है. So at this time काफी अच्छे offers होंगे बट काफी limited sizes available होंगे. So yeah, और मैंने ये सब items end में जनवरी के मंगाए हैं. At that time काफी अच्छी deals थी, काफी अच्छे offers थे, and luckily I also find my sizes in a lot of products. So yeah, I bought few items from Zara sale and I'm really happy about most of them. Only one piece is the thing which I don't like, but other than that I love all the products which I got. I bought one bag, two tops, and the rest is all the bottoms, and all the products which I bought in this sale are under Rs.1000 and most of the products are of Rs.990 only. So yeah, without further ado, let me just share with you guys what all I bought from the Zara sale. So the first item from the Zara sale is this beautiful green color bag. I love this bag a lot. It's really beautiful and fancy. It has this gold chain detailing to it. और ये sling bag है which looks supremely nice. It was called that some mini bag, but बिल्कुल भी मिनी नहीं है. इट्स अ डिसेंट साइज बैग. मेरे पास ऐसा ग्रीन कलर बैग और है, H&M का है वो, बट वो इससे काफ़ी ज़्यादा छोटा है एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड द मिनी बैग. बट इट हैज़ दिस ब्यूटिफुल एनिमल प्रिंट गोइंग ऑन ऑल ओवर इट एंड दिस ब्यूटिफुल गोल्ड चेन डिटेलिंग मेक्स इट मोर यूनिक एंड फैबुलस. सो आई लव दिस बैग अ लॉट. और अगर आप ये स्लिंग नहीं कैरी करना चाहते देन यू कैन ऑल्सो होल्ड इट लाइक दिस, बट ये चेन डिटैचेबल नहीं है. सो यू हैव टू कैरी दिस chain with this bag only, and I love the handle of this bag as well. काफ़ी अच्छा बैग है, काफ़ी sturdy है और काफ़ी good quality का है. So I love this bag a lot, and the MRP of this bag is Rs.2590, but I bought it for just Rs.990 only. So this is the first item from this Zara haul. Now next up I bought this t-shirt. It's a polo t-shirt and it's in this beautiful black and creamish kind of color. काफ़ी अच्छा मटेरियल है, थिक मटेरियल. यू कैन ऑल्सो वेयर इट इन जब ज़्यादा ठंड नहीं होती और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती. यू कैन वेयर दिस टी शर्ट एट दैट टाइम ऑल्सो बिकॉज काफ़ी अच्छा थिक मटेरियल है एंड आई रियली लाइक दिस प्रिंट ऑल्सो. इसमें ट्राउज़र भी था सेम प्रिंट का, बट वो आउट ऑफ स्टॉक था. बट अगर वो स्टॉक में होता देन आई वुड डेफिनेटली बॉट दैट वन ऑल्सो, बिकॉज फिर अच्छा पेयर बन जाता एंड इट विल लुक सुप्रीमली नाइस. बट विद अ ब्लैक जीन इट विल लुक रियली नाइस. एंड या काफ़ी अच्छा मटेरियल है, कॉलर टी शर्ट है. एंड द MRP ऑफ दिस वन इज 1890 रुपीज़, बट आई बॉट इट फॉर जस्ट Rs.690 एंड आई बॉट इट इन द साइज मीडियम, बट मेरा साइज स्मॉल है. बट मैंने मीडियम इसलिए लिया बिकॉज टी शर्ट्स काफ़ी लूज अच्छी लगती है मुझको, एंड दैट्स व्हाई आई बॉट इट इन द साइज मीडियम. So yeah, it's a very beautiful, nice, comfortable t-shirt which you will really love during the summer season. Now next up I bought this shirt. So this is a cotton shirt and ये multi-color shirt है and looks supremely nice. The fabric is also really nice. It's a cotton material and cotton बहुत ही अच्छा होता है summer के लिए. I really love wearing cotton during the summer season and I bought this one for the summers only. So it's a very beautiful printed t-shirt. I love the fabric, I love the print of it. So I bought this t-shirt in the size extra small, but ये उन्होंने मीडियम साइज में भेज दी है. लाइक यहाँ पर मीडियम लिखा हुआ है बट ये टैग एक्स्ट्रा स्मॉल का ही है. आई डोंट नो उन्होंने ऐसा क्यों किया, बट आई एम ग्लैड कि उन्होंने मीडियम भेजा बिकॉज मीडियम काफ़ी अच्छा लग रहा है. दैट लूज फिटिंग
आई रियली लव. सो मीडियम वो काफ़ी लूज फिटिंग दे रहा है और शर्ट में लूज फिटिंग लाइक टी शर्ट्स एंड शर्ट्स में लूज फिटिंग अच्छी लगती है, बट एट दैट टाइम एक्स्ट्रा स्मॉल ही अवेलेबल था एंड आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय दिस शर्ट फॉर द समर सीजन. सो आई जस्ट ग्रैब द एक्स्ट्रा स्मॉल, बट आई एम ग्लैड कि उन्होंने मीडियम भेज दिया. सो आई रियली लव दिस प्रिंटेड कॉटन शर्ट. इट विल लुक रियली नाइस विद द ब्लू डेनिम, with the white denim, with the black denim, with any denim. आप tuck in करके थोड़ा सा पहनो, it will look really nice and fabulous. And the original MRP of this one is 2790, but I bought it for just ₹990. Now मैंने यही सिर्फ 2 टॉप लिए और ये बैग लिया. Now rest of the product which I have is all the bottom wear. I bought some really incredibly beautiful denims and trousers which you don't easily find at such a fabulous price. And Zara पर तो आपको इतने fabulous prices पे तो आपको सिर्फ basic stuff ही मिलता है, but I bought these beautiful denims at such a great price. So yeah, now let's just start my bottom wear haul. So the first bottom which I have is this denim. It's a cropped trouser kind of denim. The thing which makes it stylish and really nice is this gold button detailing which looks supremely nice. ये gold button detailing इसको काफी unique और stylish बना देती है and इसका color भी काफी अच्छा है. It's not white, it's that creamish kind of color which looks supremely nice. और इसमें बैक पॉकेट है, फ्रंट पॉकेट नहीं है एंड वाइड लेग ट्राउजर है. सो इट्स रियली कंफर्टेबल एंड नाइस एंड आई एब्सोल्युटली लव Zara denims and trousers because वो काफी कंफर्टेबल होते हैं and I love the color of it, I love the fabric of it, and this gold button detailing makes it even more good. And the original MRP of this one is ₹2790, but I bought it for just ₹990 only. Now next up I bought this beautiful pink trouser. So this pink trouser is made up of really good fabric. I really love the fabric of it and the color is absolutely fabulous. I love this color a lot, but the main problem in this trouser is that कि इसकी zip टूटी हुई है and I don't know if I should return it or just get it fixed, but I'm thinking to get it fixed because the main MRP of this one is ₹990 and I bought it for just ₹790. So $790 में trousers आपको Zara पे easily मिलते नहीं है. So I'm just thinking कि chain fix हो जाएगी and then it will be as good as it should be. So yeah, this trouser is really good and nice. I love this one a lot. इसके साथ ब्लेजर भी था बट वो आउट ऑफ स्टॉक था. एज आई टोल्ड यू कि या तो काफ़ी स्टफ आउट ऑफ स्टॉक होगा या उसमें आपको साइजेस अवेलेबल नहीं होगा. सो या इसमें भी इसका जो ब्लेजर था वो आउट ऑफ स्टॉक था, बट अगर वो होता देन बात ही कुछ और होती. बट आई बॉट दिस ब्यूटिफुल पैंट एंड आई विल पेयर इट अप विद व्हाइट टॉप और व्हाइट शर्ट विच विल लुक रियली गुड ऑन दिस कलर. सो या दिस इज द नेक्स्ट परचेज फ्रॉम दिस हॉल. नाउ नेक्स्ट अप आई बॉट दिस ब्यूटिफुल पेयर ऑफ डेनिम्स. आई लव दिस वन अ लॉट एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पीसेज फ्रॉम दिस एंटायर हॉल. सो ये लिमिटेड एडिशन में आती है एंड इट्स दैट सी कलेक्शन और समथिंग लाइक दैट दे हैव एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पेयर ऑफ प्रिंटेड डेनिम एंड इसके ऊपर मरमेड बना हुआ है, सीशेल बना हुआ है, स्टारफिश बनी हुई है एंड सम डॉट्स एंड दिस डेनिम लुक्स सुप्रीमली ब्यूटिफुल एंड नाइस. आई डोंट ओन एनीथिंग लाइक दिस एंड आई एम रियली हैप्पी कि मेरे को इसमें अपना साइज मिल गया. आई लव द फिटिंग ऑफ इट, आई लव द फैब्रिक ऑफ इट, आई लव द प्रिंट ऑफ इट एंड द प्राइस ऑफ दिस डेनिम इज ऑल्सो रियली नाइस. सो द MRP ऑफ दिस वन इज 2990 बट आई बॉट इट फॉर जस्ट ₹990. Like I am amazed. I don't know how I got this beautiful denim for just ₹990. You will not easily find such beautiful pairs of denims under such a good price. And ये काफी अच्छा print है. Like it's not so much and looks really nice on this beautiful black color. So yeah, I really love this denim a lot and this is the next purchase from this haul. Now next up I bought this beautiful light mint color trouser. I really love this piece a lot. The thing which makes it more beautiful is this beautiful button detailing on the side. I love this button detailing a lot. और इसमें कोई भी बटन्स आगे नहीं है. इट ओनली हैज दिस बटन डिटेलिंग और यहीं से आपका ये क्लोज होगी. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइट मिंट कलर ट्राउजर. सो इस वाले में फ्रंट में पॉकेट है, बैक में पॉकेट नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बना रखा है, पॉकेट नहीं है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइट मिंट कलर ट्राउजर और वाइड लेग ट्राउजर है एज यू कैन सी. और नीचे रगेड डिटेलिंग है विच लुक सुप्रीमली नाइस एंड क्यूट. सो द MRP ऑफ दिस वन इज 2990 बट आई बॉट इट फॉर जस्ट ₹990 एंड फॉर जस्ट ₹990 I love this piece. और ये बटन डिटेलिंग तो इसमें बहुत ही अच्छी है और काफ़ी यूनिक पीस इसको बना देता है ये बटन डिटेलिंग. सो आई रियली लव दिस पीस अ लॉट. Now next up I bought this pair of trousers
and this one is also very beautiful and comfortable trouser. I love the material of it. It's really comfortable. It's in this light yellow creamish kind of color, which looks really nice, and it's a basic wide leg trouser. And the best part about this trouser is that it has pockets at both sides. Front में भी pocket है और back में भी pocket है. So it's the best thing. Like if you're a woman, then you know the struggle of not having so much pockets. Like कभी front में pocket होती है तो back में नहीं होती, back में होती है तो front में नहीं होती. But this one has pockets at both the sides, which is a very good thing, and the material is really good. Button hai, zip hai, normal trouser hai, and looks really cute. And I bought it in the size small, and the MRP of this one is 2990, but I only got it for rupees 990 again. Now the next pair of denim I have is this one. So it's a wide leg denim, but it's also supremely long. Like it's a long trouser, like full length trouser, और ये काफ़ी लॉन्ग है. सो आई हैव टू जस्ट गेट इट कट, क्योंकि हील पहनने के बाद भी काफ़ी लंबी है ये, और मैं गिर जाऊंगी अगर इतनी लंबी ट्राउज़र पहनूंगी तो. सो या दिस इज़ हाउ दिस लुक्स. थोड़ी सी रिब्ड डिटेलिंग है इसमें, लाइक बहुत ही टाइनी माइनी. लाइक हियर इट हैज़ दिस little bit ribbed detailing, and white denim hai, and it also has this split detailing at the bottom, like as you can see कि यहाँ पे split बनी हुई है, which makes it look really chic and stylish. So this is that, and the MRP of this one is 2790, but I also got it for just rupees 990 again. And यहाँ पर भी थोड़ी सी ribbed detailing है, not so much, and it also has pocket at both the sides, like front में भी pocket और back में भी pocket है, and it's really comfortable as well. I own few denims from Zara, and they all are supremely good quality and supremely comfortable. So this is the next purchase. Now the last item from this entire haul is this pair of legging. I don't like this one a lot because of its itchy material. So ये material मुझे itch कर रहा है, like बहुत ज़्यादा चुभ रहा है. So I'm not supremely comfortable into this one, and I bought it in the size small. So I'm in the size small, and the MRP of this one is 1790 rupees, but I bought it for rupees 990. But ये material मुझे काफ़ी itch कर रहा है. But if you're comfortable into materials like this, then you can definitely try this one. It's a very beautiful one. Print काफ़ी अच्छा है, like check print है, and will look supremely nice on so many outfits. And ये legging है जिसमें pockets वगैरह कुछ नहीं है, बस ये button है और chain है. So yeah, this is how this legging looks. Check detailing है dark green और creamish color की, and looks supremely nice. But ये मुझे material itch कर रहा है. अगर कोई अंदर lining वगैरह होती then it would not itch me, but I'm not so comfortable into this material, so I will return this item. But I will return this item, and this is the only item which I'll return. Other than that, I bought fabulous deals and fabulous offers on all the stuff, and the fabric and the quality is top notch of all the products which I got other than this one. And yeah, that's it for this video. I really hope that you enjoyed this video, and if you like it, then don't forget to like, share and subscribe my channel. It will mean a lot to me. And yeah, that's it for today. I'll see you guys super soon with a brand new video. Till then, bye bye, take care.